शेयर कर दे लिंक, मैं ही फॉरवर्ड कर रहा हूँ। मैम यस मैम। कंपेयर शुरू कर दीजिए। चलिए मैडम 1 मिनट वेट कीजिए, बस ये लिंक शेयर करने के बाद। लिंक शेयर हो जाए तो मैं भी मेरे ग्रुप में, मेरी फर्स्ट ईयर के ग्रुप में सेंड कर दूं। जी जी। वो भी यूट्यूब में डायरेक्ट अपना कॉलेज का Okay, madam, we are on the live. Ankur sir has already shared the link. Chairman, have you forwarded on your class group? Chairman, please start. Yes. A very warm good afternoon to all of you. Today we are present here to have a session by our resource person, Professor Tulika Mukherjee. To start this program, first we have a silent prayer. So please join your hands, close your eyes, and be ready for the silent prayer. Thank you so much. So I, Professor Shizal Gupta, welcomes all of you on behalf of Counselling and Tutorial Committee in this session of how to overcome the challenges. The resource person is Professor Tulika Mukherjee. She is the faculty of Psychological Department. So now I request Tulika ma'am to please share his views about us on this topic. Ma'am, please. Thank you, ma'am. Ma'am, please allow me to share my screen for the same. Anku sir? Yes, ma'am, please wait. Yes. Okay. Ankur sir? Yes, now you can share, ma'am. You can share. Thank you, sir.
Tulika ma'am, your screen is not properly visible. Ma'am, your mic is mute. Is it okay, ma'am, now? Yeah, ma'am, you are visible. Okay. I'm just sharing you the screen, ma'am. Yes, ma'am. Is the screen visible to you all, ma'am? Yes, ma'am. Visible. Yes, ma'am. Okay. A very good afternoon to all of you, respected director, sir, respected sister, and all DMI faculty members and students. Today I have been given this very topic, which is on how to overcome the challenges in life, right? So, as we all know that we are surrounded by many difficulties in life, right? So first, I would like to ask you right now, how all are you feeling? So you can rate your feelings as per these 5 ratings, okay, that you can see on the screen. So first is for very happy, second is for happy, third is for okay, fourth is for sad, worried, and fifth is for very sad, worried, or very worried, okay. So you can rate it accordingly as per whatever you are feeling right now. So I can see, sir, can I be able to see it on the chat section? Yes, ma'am. Okay. Students, please give me your responses. In whatever manner you are feeling like right now, you can give your responses Excuse among these Tulika, 5. ma'am. Yes, sir. Students are watching only on the YouTube. Oh, okay, okay. Students are only on YouTube, ma'am. Okay, okay, fine, fine, fine. Okay. So we shall proceed further. Okay. Yes. Now, the topics that are there, I'll be covering today. Okay. So, career-oriented issues. Okay. As you all know that we are facing career-oriented issues like procrastination, catastrophizing, then motivation-related issues, behavioral issues, emotional issues. Okay. In the present time, also we can see the pandemic issues are there. So, which is again disturbing our daily routine activities. Okay. So in studies, if we talk about lack of concentration, irritability, okay, then fear, maybe it is related to the academic performances, maybe some situational issues are there, okay, then focus issues, how to concentrate on studies, forgetting issues, even if we have studied the things so many times, but then we used to usually forget the things, okay, so some stress may be working behind it, right? So we need to exactly find the root cause, what is disturbing you, right? Then the anger related issues. So I have few anger management strategies also for you today, okay. Then relationships issues, so on and so forth, right? Then what is a problem? Okay, then problem solving. Okay, I'll let you through problem solving skills, then the categories of problem solving, right? Then how can we become or how can we be motivated all the time? So I'll let you through the motivation process, okay, motivation strategies, and last but not the least, the anger management techniques that we have for you today, right? So as we all know, we have a beautiful life, right?
we are having a beautiful life, and it's a beautiful journey where you are the hero of your life. Okay, so in this movie of life, you are the director, you are your own director. Okay, so the all the command has to be on your hand. So how to become the hero of your own life movie, right? How to become a director of your own life. So here we go. So it's a you can see if the command is on your hand. Okay, so you can take up of your life, right? आप लाइफ में आपके किस तरीके से भी आपकी जर्नी को आप जो है डिसाइड करेंगे या आपकी जर्नी की प्लानिंग करेंगे, दैट इज अप टू यू, because you are the director of your own movie, right? Then this is a mental cage you can see. Okay, I'll go bilingual for the students, for the convenience of the students, right? So you can see here a mental cage is there, right? आपका mind जो है, आपका mind जो है, देखिए आप एक केज में बंद हैं, ठीक है? और जो जिस केज में वो बंद है उसके सराउंडिंग जो इश्यूज है, you can see behavioral issues are there, okay, anger issues are there, overthinking is there, right? Emotional issues are there, lack of concentration, procrastination, catastrophizing, okay, so these many issues, and more than the uh, इसके अलावा भी other than these issues also there are many other issues, right? So you can see your mind is in cage. Okay, your mind is in cage, और जब mind cage में होता है, so our mind becomes unable to decide or to find a solution for any kind of resolution for any kind of a problem that we are facing, right? So then प्रॉब्लम्स आप सब हम सबकी लाइफ में होती हैं, राइट? चैलेंजेस इश्यूज हम सभी के लाइफ में होती है, बट देन हाउ टू सॉल्व इट, दैट मेक्स अ डिफरेंस, राइट? सो problem solving, if I talk about, it is a motivational drive. Okay, it is a motivational drive for reading a definite goal from a present situation or a condition that is either not moving toward that goal, is distant from it, right? So like we all have a goal in life. Okay, so it is a hindrance. Okay, it is a hindrance that we call a problem if it is creating a disturbance to achieve our goals in life. Okay, we see it very distant, we see it very far from us. So these are the whatever challenges or whatever problems, whatever issues we have in our life, so we should have a problem solving skill. Okay, that skill should be there in us, so we can find a solution toward finding a solution to toward a problem, right? So it requires more logical analysis for finding a missing description of conditions, steps towards that goal. So problem solving gives us a step toward finding a solution towards our towards reaching our goal, right? So it incorporates pragmatics, which is a logical reasoning. Okay, when we try to find solutions for problems, so there we have to use our logics. There we have to give our own reasonings. Okay, then semanticism is there. Semanticism means interpretation or finding meanings. So interpretation of meanings behind any problem. So that is a very subjective factor that is depending on the individual differences. Individual differences may be your personality traits, maybe your personality types. Okay, maybe your own feelings, motives, motivation. So all are these your subjective factor which influence the problem solving skills in one individual that individual possesses within him or her. Okay, then problem solving basically problem basically can be categorized into two types by Scatter, right? In 2009, Scatter has classified or categorized problems into two types basically. Okay, first is ill-defined and the second one is well-defined, right? So if I talk about ill-defined problems, so issues do not have clear goals, solution paths, or expected solutions. So which the problem which is ill-defined, okay, which is not defined, so that would we understand by this term that that would definitely not have clear goals. है ना? If the goals are clear, अगर goals भी clear हैं, तो वो problem नहीं रहेंगी, है ना? हर step जो है crystal clear रहेगा, ठीक है? So ill-defined problems do not have proper goals, okay, or clear goals. Okay, then the solution parts are also very vague.
here, है ना, वो वेग रहेंगे, क्लियर नहीं रहेंगे. देन द एक्सपेक्टेड सॉल्यूशंस भी जो रहेंगे वो भी इम्प्रॉपर रहेंगे. ठीक है, तो अगर आपके गोल्स ही क्लियर नहीं है तो आप किसके टुवर्ड्स अपने सॉल्यूशंस को फाइंड करेंगे, है ना. अगर इफ देयर वुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, देन फॉर व्हाट यू आर फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू, राइट. तो इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स में यही होता है, क्लियर गोल्स नहीं होते हैं, सोल्यूशन पाथ क्लियर नहीं होता है, एक्सपेक्टेड सॉल्यूशंस भी नहीं होते हैं, राइट. देन इफ वी टॉक अबाउट वेल डिफाइंड प्रॉब्लम, इसमें स्पेसिफिक गोल्स होते हैं, गोल्स आर वेरी क्लियर, then clearly defined solutions. If goals are clear, then the solutions are also clear. Okay, then the clear expected solutions. Then if a problem is defined, well defined, then you would have your expected solutions would be more clear comparatively, right. Then these are the two categories of a problem. Then there are some steps of problem solving, right. Individual possess problem solving skills, so by using these steps, okay. So first, individual analyzes. Excuse me. First, individual who has a problem has to analyze his or her problem, okay. Then one has to go through analysis of the problem, problem shaping, where the organization of the problem occurs. तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो एनालिसिस के बाद में उसको ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, है ना. सो देयर इज अ स्ट्रक्चर ऑफ द प्रॉब्लम, राइट. The structure of the problem has to be organized and the steps has to be organized, the solution has to be organized, okay. Then generating alternative strategies, okay. अब एक ही प्रॉब्लम के it is not necessary that only one solution is there, okay. We can have n number of solutions, we can have n number of ways towards solving that problem, right. So alternative strategies are there. अगर एक से नहीं सॉल्व होता है तो दूसरा देखेंगे, दूसरे से नहीं सॉल्व होता है तो तीसरा देखेंगे, तीसरे से नहीं होता है तो चौथा देखेंगे. So these are the solutions, these are the ways, these are the alternative strategies by which we can solve or we can resolve the problem. Okay, so we have to find we have to generate the alternative strategies towards solving a problem, right. Then coming to implementation of the attempted solution. So जितने भी हमने solutions देखे हैं उनको हम implement करके देखेंगे, है ना. implementation करके देखेंगे उनका हम कि कौन सी problem actually कौन से solution actually problem को solve कर रही है, okay. So after the implementation of the attempted solutions, whatever we have found, okay, for the solution of the problem, so we will implement those, okay, and we'll see actually which solution is for this resolution of the problem, right. Then we kind of verify the thing. Whatever solution we have selected so far, we will verify it according to the problem that yes, this problem, this solution is solving the problem, okay. So here the step of verification functions, okay, and these are all the steps of problem solving, right. Then moving to the strategies of problem solving, okay. How do we the strategies towards solving a problem, okay. So these are the strategies we can use for solving our problems, okay. First is their trial and error. As the name suggests, we try things, we make errors, and we learn through that, okay. So continue trying different solutions until problem is solved, okay. So we try new things. Even if we try new things, we find difficulties in those things, okay. So we try things, we commit error, we make it, through them we learn and we achieve our goals. So this is being one of the strategies by which problem can be solved, okay. Then comes algorithm, okay. In you might have mathematics students have already heard these algorithm terms, heuristic terms, okay. These terms are familiar to the mathematics or physics students, right. So algorithm means step-by-step problem solving formula, okay. So in algorithm part, what we do is we formulate the problem, we distribute the problem in step-by-step manner, okay. So for the solution, okay, for finding a solution, so we distribute or we divide the problem into step-by-step form, okay, as to find the solution of the problem, right. And next comes the heuristic, okay, general problem solving framework. It focuses basically on the end result. हमारे हाथ में आखिर में क्या आ रहा है या हमारे हाथ में आखिर में हमारा जो आउटकम रहेगा
वो क्या आ सकता है। ओके, ये है हमारे शॉर्ट टर्म, जब हमारे पास में बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन है, so heuristic works there. Okay, so what all steps are there for applying heuristic for problem, for finding a solution for a problem. Okay, so these are the steps. So when one is faced with too much information, अगर आपके पास में information loading है, overloading है rather, okay, आपके पास में बहुत सारी information है और वहाँ आपको किसी problem का solution ढूंढना है, तो ठीक है, when the time to make a decision is limited, अगर आपके पास में बहुत ही short duration है, information बहुत सारे हैं, okay, when the decision is to be made is unimportant, okay, decision इतना भी जो है important नहीं है, importance नहीं रखता है, okay, when there is access to very little information to use in making decision, okay, बहुत सारे access, okay, then when an appropriate heuristic happens to come in mind in the same moment, बहुत सारे अगर solutions या बहुत सारे heuristics अगर mind में एक साथ में एक ही time पे आ रहे हैं, तो ठीक है, then these are the scenarios where you can use the heuristics, okay, to find a solution for a problem. Then analogy, the next strategy is analogy, okay, you try to find association. Similar अगर situation आपकी life में पहले भी हुआ है, तो आप जो है similar kind of solutions similar kind of solutions सीख करते हैं, okay, similar kind of problem अगर आपकी life में पहले भी हुआ है, जैसे आप कहते हैं ना कि ये तो मैं पहले भी face कर चुका हूँ, तो आप जो है पहले जो भी सिचुएशंस आपने फेस की है, यू ट्राई टू फाइंड एन एनालॉजी, यू ट्राई टू फाइंड एन एनालॉजी, ओके, यू ट्राई टू फाइंड अ सिमिलैरिटी, है ना, तब आपने कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। तो एनालॉजी इज यूजिंग अ सॉल्यूशन दैट सॉल्व्स अ सिमिलर प्रॉब्लम, है ना, एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व, सिमिलर प्रॉब्लम्स को अगर आपने आपकी पास्ट एक्सपीरियंसेस में सॉल्व किए हैं, तो आप उन्हीं प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को आपने पहले जिस तरीके से उस प्रॉब्लम को ट्रीट किया था, you try to apply those things in a same manner, ठीक है, so analogy is that. Then brainstorming, you are also familiar with this term. So in brainstorming, what happens, collecting and analyzing a large amount of solutions, especially within a group of people, to combine the solutions and developing them until an optimal solution is reached. So brainstorming में भी यही सारी चीजें होती है कि बहुत सारे solutions जब आपके पास में होते हैं और आपके दिमाग में एकदम से बहुत सारे सॉल्यूशंस जो है अकर होते हैं, ओके, और आप उन सारे को कंबाइन करते हैं टू रीच दैट ऑप्टिमल लेवल, ओके, टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. सो दिस इज व्हाट ब्रेनस्टॉर्मिंग हैपेंस इन योर ब्रेन, ओके. Then coming to the next problem solving strategy, which is divide and conquer, okay. In this, breaking down the large complex problems into small and more manageable problems. यहाँ आप क्या करते हैं, आप problems को जो है ब्रेक डाउन कर लेते हैं, है ना. अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो हम उस प्रॉब्लम को जो है ब्रेक डाउन करके भी उसके सॉल्यूशंस को निकाल सकते हैं. जैसे होता है ना कि आपके कोई अगर लॉन्ग टर्म गोल है तो आप उससे पहले कुछ शॉर्ट टर्म गोल बनाते हैं टू रीच दैट लॉन्ग टर्म गोल, ओके. सो दिस इज व्हाट यू हैव ब्रोकन योर बिग प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर वन, ओके. ज्यादा अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो आपने उनको स्मॉल प्रॉब्लम्स में या स्मॉल मैनेजेबल चंक्स में जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है ताकि आप हर एक के टारगेट्स को मीट कर पाए इंडिविजुअली, ओके. सो इससे क्या होगा कि आपका एंकरेजमेंट भी बना हुआ रहेगा, आपका मोटिवेशन भी बना हुआ रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप स्टेप वाइज प्रॉब्लम्स को के सॉल्यूशंस को मीट करते जाएंगे वैसे वैसे जो है आप कॉन्कर करेंगे, है ना. वैसे वैसे कॉन्कर करेंगे तो कॉन्कर will give you the further motivation. Each and every conquering would give you the further motivation, okay, to finding the solution for the next problem that is there, right? Then comes the lateral thinking, approaching problems indirectly and creatively by viewing the problem in a new and unusual light. अब यहाँ क्रिएटिविटी का रोल हमें दिखता है ना, थोड़ी लेटरल थिंकिंग में जो भी प्रॉब्लम्स आपकी है ना, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, है ना, उसके लिए आपको एक जो है इनोवेटिव सोल्यूशन को सीख करते हैं आप, है ना, एक क्रिएटिव
तरीके से आप सोचते हैं, अलग यूनिक वे में सोचते हैं, एज यू ऑल नो दैट आवर पर्सनालिटीज आर वेरी यूनिक, ओके, बिकॉज ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस दैट वी हैव, है ना. So if we talk about personality, we all are different in terms of personality, in terms of individual differences. Okay. Then comes, so unusual सा आप जो है new एक innovative solution जो है आप ढूंढते हैं in lateral thinking. Then comes means ends analysis. Okay. So here choosing and analyzing an action at a series of smaller steps to move closer to the goal. यहाँ आप मेन एंड्स को एनालाइज करते हैं, ओके, और एक सीरीज बना लेते हैं स्मॉल 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 स्टेप्स की, ताकि वो आपको आपके फाइनल डेस्टिनेशन या गोल तक रीच करवाने में वही स्टेप्स जो है एमलगमेट करे और फाइनली आपके गोल, आपके डेस्टिनेशन तक आपको पहुंचा दें. ठीक है. सो दिस इज व्हाट मीन्स एंड एनालिसिस. देन कम्स रूट कॉज एनालिसिस. Okay, so when we talk about root cause analysis, they are trying to identify the cause of the problem, है ना. The problem, what it causes, है ना, what it can cause, ठीक है. The consequences, you are looking at the consequences of the problem, or you are just trying to identify what could be the causes of the problem. Okay, what could be the consequences of the problem. ठीक है. सो दिस इज रूट कॉज एनालिसिस. आप पहले ही कॉजेस को एनालाइज कर रहे हैं, जैसे हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं कॉज एंड इफेक्ट. ओके, कॉज एंड इफेक्ट इज अ रिलेशनशिप. ओके, सो व्हाट कॉजेस द प्रॉब्लम, है ना, और उसके बाद से आफ्टरमैथ इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं. ओके, सो दिस इज अ रिलेशनशिप व्हिच इज नोन एज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. तो यहाँ पर रूट कॉज एनालिसिस में जो प्रॉब्लम का कॉज है उन्हें हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं. ठीक है. Then you can see a very famous saying which is given by David Allen. You can see our brain is there. Okay, so your brain is a thinking tool, not a storage device. Okay, life में इतने सारे हमारे सारे सभी के इनफैक्ट challenges, issues, okay, problems होते हैं, but then it is not necessary for all of us to store them. Okay, solutions अगर आपने थोड़े बहुत एनालॉजी जैसे हमने पढ़ा है, अगर आपने ध्यान रखा है तो इट इज गुड, बिकॉज दैट्स द पार्ट ऑफ योर लर्निंग, किस तरीके से आपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया है. बट देन इट्स नॉट अ स्टोरेज डिवाइस, इट्स नॉट अ स्टोरेज टूल कि आपने सारे जो है स्ट्रेस, डिप्रेशन, ओके, फ्रस्ट्रेशन, जो भी इन सारी चीजों से रिलेटेड मेंटल जो है इंस्टेबिलिटी जो कि आगे कॉज करते हैं, है ना, तो इन सब चीजों को आपको जो है स्टोरेज डिवाइस में आपके ब्रेन में स्टोर करके नहीं रखना है, बिकॉज इट्स अ थिंकिंग टूल. ओके, योर ब्रेन इज अ थिंकिंग टूल बाय विच यू कैन, मतलब कहते हैं ना कि आप जो है अपने माइंड को एज अ फ्रेंड भी यूज कर सकते हैं और एज एन एनिमी भी यूज कर सकते हैं, है ना. तो अगर आपने उसे एज अ फ्रेंड यूज किया तो यू कैन गो लॉन्गर. ओके, बट अगर आपने उसे एज एन एनिमी यूज किया तो यू कैन बी नोवेयर, है ना, आप कहीं नहीं पहुंच सकते. तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग टूल. ओके, so it's a thinking tool and you have to use it like one. Okay, it's not a storage device. So it's a very famous and very popular saying by David Allen. Okay, then so here we go with the motivation process. So that is very much required to be all the time motivated in our life, है ना. So coping because comes through it, है ना. जब भी आप अपनी लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम से स्टक होते हैं या कोई भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं, है ना, तो कोपिंग स्किल्स आपको है जो बाहर निकालती है ना, आपके खुद के अपने मोटिवेशन जो है आपको बाहर निकालता है. ठीक है. तो मोटिवेशन इज अ प्रोसेस बाय द वे. ओके, जहाँ की आपके कुछ अनसेटिस्फाइड नीड्स होते हैं अपनी लाइफ में, है ना, जो भी जो है अनफुलफिलिंग या अनसेटिस्फाइंग नीड्स होते हैं आपकी लाइफ में, वो जो है अ काइंड ऑफ टेंशन क्रिएट करते हैं, है ना. सो दैट टेंशन क्रिएट्स अ ड्राइव, है ना, एंड दैट ड्राइव्स यू, है ना, टू सर्च अ बिहेवियर टू रिजॉल्व द सॉल्यूशंस फॉर दैट प्रॉब्लम, है ना. सो अनसेटिस्फाइड पहले तो नीड है, तो उस नीड ने जो है एक टेंशन क्रिएट किया. ओके, टेंशन क्रिएट होने के बाद में इट वुड क्रिएट अ ड्राइव, इट वुड जनरेट अ ड्राइव. ओके, एंड दैट ड्राइव वुड लेट यू टू सर्च अ बिहेवियर, to search a proper behavior, to search a
to search an effective behavior, okay, to satisfy your needs, है ना, which was not fulfilling at the very first स्टेज, ओके, जहाँ की अनसेटिस्फाइड नीड था आपका, ठीक है। सो आप जो है किसी एक बिहेवियर को ऐसा सिलेक्ट करने पर जो आपके नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, ओके, देन आफ्टर सेटिस्फाइंग योर नीड यू वुड रिड्यूस योर टेंशन, है ना। सो इट वुड डायरेक्टली रिड्यूस द टेंशन whatever it has been created after the unsatisfaction of your need, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम की तैयारी करनी है ना, आपकी नीड है, आपको एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है, आपको एग्जाम में अच्छा जो है तैयारी करनी है, पढ़ना है आपको, है ना। सो एग्जाम ने जो है एक टेंशन क्रिएट कर दिया, है ना। आपकी नीड थी आपको अच्छा परफॉर्म करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, ओके। सो उसने एक अपने आप में टेंशन क्रिएट कर दिया। सो आपकी ड्राइव जो हुई, इट नाउ फर्दर इट वुड ड्राइव यू टू सर्च अ बिहेवियर। आप क्या करेंगे देन, यू वुड सर्च अ बिहेवियर, आप एक्शंस करेंगे, पढ़ने लगेंगे आप, है ना, आप बुक सर्च करेंगे, आप टीचर्स के नोट्स को सर्च करेंगे, आप खुद पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, है ना। सो दिस वाज योर बिहेवियर दैट यू सर्च्ड, ओके। देन ये जो है आपका पढ़ना हो गया, ठीक है, आपकी नीड सेटिस्फैक्शन हो गई, आपने अच्छे एकेडमिक लेवल पे परफॉर्म कर दिया, आपका परफॉर्मेंस लेवल अच्छा हो गया, आपको अच्छे मार्क्स आ गए, है ना। तो ये फर्दर आपके टेंशन को इसने रिड्यूस कर दिया। दिस इज व्हाट रिडक्शन ऑफ टेंशन। So this is all the motivation process is all about, right? Then here we go with some motivation strategies, which is also abbreviated as SMART technique. Okay, so motivation process जो आपके गोल वैल्यू को बढ़ाता है ना। हम हर एक की लाइफ में जो है एक कोई ना कोई गोल है कि हमें यहाँ पहुँचना है, हमें वहाँ पहुँचना है, हमें ये करना है अपनी लाइफ में, है ना। बट देन along with that you have to believe in yourself कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, okay. So that belief should be there in yourself, right? Then some motivation techniques which is abbreviated as SMART technique is there for you, okay. So we can apply this technique. So S here stands for specific, okay. यहाँ आप 3 W's को देख पा रहे हैं, what, who, where and 1 H, that is for how, okay. तो आपके जो मतलब आपको मोटिवेटेड रहने के लिए सबसे पहले तो जो है पता लगाना पड़ेगा कि आप किस चीज के लिए क्या चीज जो है आप किस चीज के लिए मोटिवेटेड होना चाहते हैं, ओके। आप किन के लिए होना चाहते हैं, ओके। आप कहाँ होना चाहते हैं, है ना, एंड आप कैसे होना चाहते हैं, ठीक है। सो ऑल द स्ट्रक्चर हैज टू बी वेरी मच क्लियर, ठीक है, अबाउट द स्पेसिफिक थिंग दैट यू हैव इन योर लाइफ एज गोल। देन मेजरेबल, ओके। आपको इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिफाइंग, क्वांटिफिकेशन, सो दैट हैज टू बी मेजर्ड कि आपको सपोज ऑफिसर बनना है आपकी लाइफ में, तो आपको कितना पढ़ना पड़ेगा, है ना। आपको जो है आपका पूरा सिलेबस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सिलेबस के जो कंटेंट्स है दैट इज ऑल क्वांटिफाइड, है ना, दैट इज ऑल मेजरेबल, दैट कैन बी मेजरेबल कि इतना इतना हो गया, इतना इतना हो गया, नाउ इतना इतना इज लेफ्ट, इतना इतना इज रिमेनिंग, राइट। देन ए, अब अटेनेबल की जहां बात आती है तो रियलिस्टिक जो है आपका अप्रोच होना चाहिए कि जैसा अगर आप कोई सिलेबस लेके बैठे हैं तो पांचों के पांचों यूनिट अगर आपने सोचा कि ये तो आज ही मैं कर लूंगा, तो इज इट अटेनेबल? नो, इट इज नॉट अटेनेबल, है ना। अगर होता तो वो डिस्ट्रीब्यूशन आपको नहीं करना होता, है ना। तो आपको देखना पड़ेगा कि रियलिस्टिकली आप कितने जो है पोर्शन वाइज आपने जो डिवाइड किया है उसको आप कितना पर डे मीट कर पा रहे हैं, है ना, क्या वो अटेनेबल है ना। सो दैट वे यू हैव टू बी रियलिस्टिक, यू हैव टू हैव अ रियलिस्टिक अप्रोच, ठीक है, विच इज अटेनेबल। अब हर एक की इंडिविजुअल कैपेसिटी होती है, एबिलिटीज होती है ना। सो रियलाइजिंग योर एबिलिटीज, योर कैपेबिलिटीज, योर कैपेसिटीज, ओके, योर कैलिबर, ओके, यू हैव टू फाइंड, you have to seek for the realistic approach. On the basis of realistic approach, whatever attainable, however attainable, okay, जितना भी आपसे attainable होता है, you have to manage, okay. Then relevancy भी देखनी पड़ेगी, है ना। R stands for relevant कि कितना relevant हो रहा है आपके goals के साथ में, okay. Then the T is for timed, है ना, schedules होने चाहिए, ठीक है, schedules होने चाहिए with date,
है ना, कि इतने दिन तक 5 दिन में मैं इतना इतना पोर्शन में पूरा कंप्लीट कर लूंगा, तो 5 दिन में मैं कर लूंगा, है ना. दैट टाइम शेड्यूल शुड बी देयर विथ डेट, with maintaining the proper date. So this is the smart technique you can use for strategizing any kind of goal that you have, okay, which works as a motivation strategy. Then you may have you can also go for developing the robust system, okay, if errors are happening. if देखिए कोई भी अगर जो गोल है आपकी लाइफ में, तो मे बी पहला प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ या दूसरा प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ, है ना, सो वी कीप अ बैकअप प्लान फॉर दैट, है ना. सो रोबस्ट सिस्टम, सो यू नीड टू डेवलप अ रोबस्ट सिस्टम, है ना. इफ एरर अकर्स, errors are there because we all know during the execution, during the execution, so you need to immediately cope with it, right. हमें ऐसा नहीं कि उसको हम लेके बैठ गए कि पहला प्लान फेल हो गया, so we are unsuccessful and we have failed. नहीं, ऐसा नहीं है. अगर पहला प्लान फेल भी होता है, so you should have a second plan with you as to cope with it quickly and grab the second plan that you are having. यहाँ पर मुझे थॉमस अल्वा एडिशन की बहुत ही एक फेमस जो है बात याद आती है. उन्होंने एक बार ही अपने किसी से बात हो रही थी, तो उनको कहा था कि उन्होंने थॉमस अल्वा एडिशन को कहा था कि आप जो है बल्ब बनाने के लिए इतने सारे टाइम फेल हुए, है ना. बट देन उनका उसमें रिप्लाई ये था कि मैं इतने टाइम फेल नहीं हुआ, मैंने इतने तरीके निकाले हैं जिससे कि बल्ब नहीं बनाया जा सकता है ना. सो दिस इज व्हाट द कॉन्फिडेंस दैट ही हैड, okay, this is what the attitude that he had, okay, towards getting the success. So हर एक बार में learning is there, okay, you are learning something, okay. Then try different approaches for studies, है ना. आपको different अलग अलग जो स्टडी अप्रोच आपको सूट करती है, आप जिसमें कंफर्टेबल होते हैं, कन्वीनियंट होते हैं, वैसे आपको स्टडी अप्रोचेस ढूंढने चाहिए, है ना. जैसे कि माइंड मैप टेक्निक्स हो गए हैं, फ्लो चार्ट टेक्निक्स हो गए हैं, नेमोनिक्स हो गए हैं, है ना. जैसे विग्योर आपका हो गया, ठीक है, बॉडमास आपका हो गया. सो दीज आर सम नेमोनिक्स, okay, by which you can learn things, by which you can memorize things. These are the aids. Then chunking method आपका हो गया, ठीक है, पार्ट एंड होल मेथड आपका हो गया, रिसाइटेशन हो गया, मेनी मोर आर देयर, राइट. देन यू वुड हैव अ मी टाइम फॉर यू, ओके. सेल्फ टॉक करना चाहिए आपको, है ना. जहाँ कहीं भी आपको रियलाइज करने का मौका मिले, ठीक है, एनालाइज करने का आपको मौका मिले, देयर यू शुड डू दैट, ओके. You should utilize your me time, है ना, for realizing yourself, for self introspection, okay. Then relaxation की भी बहुत जरूरत होती है, ठीक है. आप जो है मेडिटेशन कर सकते हैं, किसी की अगर कोई हॉबी है तो वो हॉबी कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है. देन देयर इज नो वन साइज फिट्स फॉर ऑल. as I already mentioned that we all are very unique as the individual differences say, okay. So कोई भी एक चीज जो है सबके लिए सूट नहीं करती है, ठीक है. So you have to find your own way for solving any kind of challenge or problem in your life, right. Then teach others if possible, है ना. ऐसा नहीं कि आपने कोई चीज पढ़ी है तो वो आप तक ही सीमित रखिए, नो, है ना. आप उसको ओवर टाइम भूल सकते हैं, भूल जाएंगे, है ना. सो यू हैव टू बी ओपन एंडेड इन दैट वे, है ना. यू हैव टू बी सोशल दैट वे. जितना भी आपने पढ़ा है आप कोशिश कीजिए कि उतना आप जो है कंट्रीब्यूट करें उसके थ्रू, है ना. टीच अदर्स इफ पॉसिबल. देन एपिसोडिक फ्यूचर थिंकिंग एंड एंजॉय दी काइजन. काइजन एक जापानीज टर्म है ना, जिसका मतलब होता है चेंज फॉर गुड, अच्छे के लिए चेंज होना, है ना. सो दिस इज व्हाट द फिनोमेना इज ऑल अबाउट, है ना. एंजॉय काइजन. देन एक्सेप्टेंस, यू हैव टू एक्सेप्ट थिंग्स, है ना. वॉट एवर कम्स इन योर लाइफ, एक्सेप्टेंस आपका होना चाहिए, सो दैट यू कैन कोप विथ इट वेरी इजीली. अगर आपका एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, आपने एक्सेप्ट नहीं की चीजों को, सो यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड, है ना. यू कैन नॉट लर्न फॉरवर्ड द थिंग्स. इफ एनीथिंग डिस्ट्रैक्ट्स यू, प्लीज राइट देम ऑन अ पेपर, है ना. जो कुछ भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करती है स्टडी टाइम में, ये स्पेशली कॉन्सेंट्रेशन इशू या फोकस इशू में चीजें आप रिलेट कर सकते हैं इस चीज को, कि कुछ भी चीज अगर आपको डिस्ट्रैक्ट करती है तो भले ही वो मोबाइल हो गया, भले ही वो आपका लैपटॉप हो गया, भले ही कोई फ्रेंड हो गया, ठीक है. सो यू जस्ट जॉट देम ऑन अ पेपर,
ओके, राइट देम ऑन अ पेपर एंड कीप दैट पेपर असाइड, है ना, और फिर आप जो है अपना स्टडी क्वालिटी टाइम बिल्कुल स्टडीज के लिए अपने दीजिए, ठीक है। जब कभी भी आपको लगे कि यार मुझे ये काम करना था, मुझे ये मोबाइल देखना था, मुझे ये फ्रेंड से मिलना था, तो आप उस पेपर पे जो है इट वर्क प्रैक्टिकली, ओके, आप जो है उस पेपर में अपने जो भी इश्यूज है, जो भी मतलब आपको जो भी काम है आपके, वो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। सो ग्रेजुअली क्या होगा, यू विल फाइंड अ चेंज, ठीक है। आपका डिस्ट्रैक्शन जो है वो पेपर पे चूंकि आ गया है ना, देन आपको ऐसा लगेगा कि आप भूलेंगे नहीं उस चीज को, आपकी स्टडी टाइम पूरा होने के बाद में आप उस पेपर के सारे शेड्यूल प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। देन some anger management techniques I have for you today, okay, so जैसे कि आज हम सभी को पता है कि किसी न किसी चैलेंजेस या किसी न किसी प्रॉब्लम्स की वजह से वी ऑल गेट इरिटेटेड, है ना, फ्रस्ट्रेटेड, जो कि हमारे एंगर का कई बार स्ट्रेस के कारण भी बन जाता है, ठीक है। सो किसी को भी कुछ सबसे पहले कुछ भी बोलने से पहले, है ना, थिंक फर्स्ट, पहले सोचिए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचिए, क्या आप किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उस टाइम पे आप सोचिए, यू होल्ड योरसेल्फ फॉर अ सेकेंड, okay, you think first, then you speak, okay, then gradually you can relax yourself by having a breathing control, okay, आप जो है ब्रीदिंग अपनी ऑब्जर्व कीजिए, है ना, सांस कैसे इनहेल कर रहे हैं, सांस कैसे अपनी एक्सहेल कर रहे हैं, ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग, रिलैक्सेशन यू कैन डू, यू कैन लिसन टू सम म्यूजिक आल्सो, ठीक है। एक्सप्रेस एंड एक्सरसाइज, सो फिजिकल एक्टिविटीज जो है कई हमारे न्यूरोकेमिकल्स को बैलेंस उनमें बना के रखते हैं, ठीक है। हमारे न्यूरोकेमिकल्स जो है बैलेंस फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। फिजिकल एक्सरसाइजेस आर वेरी मच नेसेसरी नाउअडेज, ठीक है। फिर जो है आप किसी के प्रति कोई भी ग्रजेस होल्ड मत कीजिए, ठीक है। अगर कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस भी है किसी के साथ में आपके, बट देन डोंट होल्ड द ग्रजेस, ठीक है। अगर आप उनको रखेंगे तो मे बी योर रिलेशनशिप get hampered, okay, gets hampered. Then humor to release tension, किसी न किसी आप कवि को पढ़िए, है ना, पोइट्स को पढ़िए, किसी न किसी कॉमेडियन को सुनिए, so humor is the best way to release your tension, your stress, है ना, so do that kind of activity, ठीक है। आज के टाइम पे तो कितने सारे कॉमेडी के शोज भी आते हैं, है ना, कितने स्टैंड अप कॉमेडियंस भी हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लिटरेरी फॉर्म्स में आपको ह्यूमर्स जहाँ है वहाँ आप पढ़िए उनको, ठीक है। सो यू कैन रिलीज योर टेंशन थ्रू देम, है ना। आप अपनी हॉबीज को प्रैक्टिस कीजिए अपने मी टाइम पे, ठीक है, दैट वुड आल्सो हेल्प यू टू रिलीज योर टेंशन, योर स्ट्रेस। देन अगर इन सारी चीजों से भी जो है लॉन्ग टर्म जो है रिलीफ नहीं होता है आपको, देन यू मे सीक हेल्प फ्रॉम अ प्रैक्टिशनर, फ्रॉम अ काउंसलर, ठीक है, फ्रॉम अ साइकियाट्रिस्ट, फ्रॉम अ साइकोलॉजिस्ट, you can seek help from them if it is serious, if it is giving you pain, okay, if you're hurting yourself emotionally, physically, anyway, then identify the solutions. अगर लॉन्ग टर्म कुछ प्रॉब्लम है, सो उसके जो सॉल्यूशंस है उसको अगर आप खुद जो है नहीं ढूंढ पा रहे हैं, है ना, अगर वो प्रॉब्लम जो है सीरियसली आपको बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है, so you can find or identify the solutions, है ना। अगर आपसे नहीं हो रहा है, आपके लेवल से नहीं हो पा रहा है, तो अपने फैमिली मेंबर्स से पूछिए, अपने फैमिली मेंबर्स से नहीं हो पा रहा है, so you can seek the help of a counselor also, you can seek the help of a psychologist also if you require that way, okay. Then what are the takeaways, okay, what are the takeaways that we have for today's session? So we have discussed about problem solving strategies. Then I would like to discuss something about, like, don't be a problem for anyone, okay. Don't be the problem creators, okay. Don't be the problem creators, become always the problem solvers. जो आउटकम है वो सोल्यूशन होना चाहिए, है ना। हमें प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं बनना है अपनी लाइफ में, हमें प्रॉब्लम सॉल्वर्स बनना है। हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, हमें वो अप्रोच को लेकर के चलना है, ओके। देन ट्राई टू फोकस ऑन सॉल्यूशंस ऑफ द चैलेंजेस, ओके। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन द सॉल्यूशन ऑफ द चैलेंजेस. Then whatever problems or solutions maybe are there, we must
first we clearly identify them. Okay, so problems and challenges has to be clearly identified, because unless and until the problem is identified, then how can we find the solutions towards solving a problem, right? So we need to identify it by using those strategies that I have discussed with you. Okay, then we should understand the nature of the problem. ठीक है, तो प्रॉब्लम किस नेचर का है, दैट वी शुड have an understanding. Okay, then the smart techniques that we have discussed, then the anger management techniques that we have discussed today. Okay, so here is my session. Now if you have any questions, then you may ask. Thank you. Over to you, sir. Thank you. Thank you, ma'am. The entire session was really very insightful. I am sure all the first year students must be benefited by this. Now, ma'am, our first year students are listening your session from YouTube. So we are having one question from the student side: how to keep ourselves motivated when things continue to go wrong? Okay, as we have already discussed some ways to keep ourselves motivated. Okay, so it is depending actually on ourselves. As I already mentioned that we are very unique. Okay, we have different personalities altogether. So that way, if we talk about to keep ourselves always motivated, so we can have we have to have a control on our daily routines also. Okay, whatever routine we are having, so we have to have a control, good control, effective control on our routines, कि किस तरीके से हम अपने डेली रूटीन्स को फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, जैसे कि हम अच्छे हमारा एक्सपोजर जो है अच्छे ग्रुप्स के साथ में हो रहा है, जो हमें मोटिवेटेड बनाए रखने के लिए हेल्पफुल है. ठीक है, हमारा एक्सपोजर अच्छे बुक्स के साथ में हो रहा है, हम अच्छी अच्छी चीजें पढ़ें. ठीक है, हम एक्सरसाइजेस करें. ठीक है, देन हम जो है अच्छे अगर आप जो है यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, ठीक है, हम अच्छे अच्छे वीडियोस देखें. ठीक है, हम अच्छे अच्छे स्टोरीज को सुनें, पढ़ें. ठीक है, हम अच्छे अच्छे हमने जो भी स्टोरीज पढ़ी है अपने लाइफ में, उसके मॉरल पार्ट पे हम ज्यादा ध्यान दें. ठीक है, प्रॉब्लम्स के पार्ट पे तो सभी आते हैं. ठीक है, बट देन एंड ऑफ द स्टोरी जो है ना, मॉरल ऑफ द स्टोरी जो है, दैट शुड बी अंडरस्टूड. ठीक है, टू मेक आवरसेल्फ मोटिवेटेड ऑल थ्रू आवर लाइफ. ठीक है, दैट इज ऑल. Thank you, Muktalika ma'am. Now, to conclude our session, I request Dr. Chetna Dubey ma'am to propose a formal vote of thanks. Chetna ma'am, please. Thank you, Sejal ma'am. If happiness is the state of mind, then gratitude is the response of mind. First of all, I extend my hearty gratitude to our director, Reverend Father Simon Raj, for his unending support and encouragement. I reserve my gratitude to Principal Dr. Alice Thomas for her guidance and motivation in our endeavor. My thanks goes to all the members of Counseling and Tutorial Committee, and especially our speaker of the day, Professor Tulika Mukherjee, for enlightening us with her precious words. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you. Thank you, Chetna ma'am. Thank you so much. Now, with the kind permission of Sister Principal and Mahesh sir, can we end this meeting? Mahesh sir, I think so sister have leave the meeting. So can we end this meeting? Yes, ma'am. We will end the meeting. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you all dear students.